तू म्यूट कर ମୁଁ କରିଦଉଛି। ମୋର ବି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। आज्ञा सर। The variable is what? Now variable is a memory location where you store the value. Okay. So when you write a program, आमे जरा program लिखिवा value को store करिया पे गोटे location दरकार. The variable होची सेमती. अब variable लो value throughout the program सब बड़े changes है कि रहिबो. तो जेते बेला हमें variable टा define करिवा हमें variable लो name दवा. जेमती केटी देले फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर तापरे एटा होची सम माने ए दीटा नंबर ऐड कला परे जो रिजल्ट आसीबो एटा सम रे स्टोर हो आम पई ए नंबर ता रहिला माने एज ए यूजर की एज ए डेवलपर वी नो दैट इट इज ए फर्स्ट नंबर इट इज ए सेकंड नंबर एंड इट इज ए सम ऑफ द वैल्यू बट फॉर ए प्रोग्रामर जे प्रोग्रामर अछि ताको एटा शो करिवो 4560 4562 4564 तो एटा होची प्रोग्रामर पाई एटा होची नंबर the address of the memory location value stored in the memory and it is called as the variable name तो सेटा कहला जे आमे जेता बेले कोन से लोकेशन ता डिफाइन करू जे से लोकेशन ने कोन वैल्यू स्टोर करियो जेमते कि सपोज बैग होची गोटे कंटेनर तो आमे बैग नै कि ता भीतर पानी रखि परियो नै बैग रे आमे कोन करि परिबा ना कोन से वेजिटेबल आमे किनि परिबा किबा कोन से सॉलिड आइटम नै परिबा आमे जदि कहबा जे मो जो बैग रे वेजिटेबल आनो छी तादरे मु आनी की परिबा आनीबी तो इट इज नॉट पॉसिबल एटा मो पय पॉसिबल हबो नै तो कोन से लिक्विड आइटम आनीबा को हेले मते गोटे क्लोज कंटेनर दैट इज मते गोटे बॉटल दरकार तो सेमती मु जते बेले मेमोरी एलोकेशन करि देबी ताले सेही मेमोरी एलोकेशन मु को वैल्यू स्टोर करिबी तो इट I will store the two type of value. One is numeric, another is character. Numeric store only the integer value or numeric value. Character store the numeric as well as the letter. The question asyo manare je in numeric you can store the what numeric value. In character you can store the numeric value. Then what is the difference between them? आमे कैरेक्टर रे न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करि परिबा न्यूमेरिक रे भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करि परिबा ये तो डिफरेंस होची आमे जो वैल्यू स्टोर करिबा कोठी ना कैरेक्टर रे तो से वैल्यू कोन हबो आमे कोनोसी एरिथमेटिकल ऑपरेशन ने यूज करि परिबा तो केमिति यूज हुए जेमि आमे कहबा प्लॉट नंबर 3 क्वार्टर नंबर 26 तो ए जो नंबरिंग आमे सब दोचे 6 7 8 9 तो दैट इज अ what part of your storing the value in a character okay the variable should be declared along with the data type the data type specify the type of the value to be stored by the variable each data type allocate the fixed amount of memory space
according to the programming language specification. आमे जो मेमोरी टा डिफाइन करिवा से मेमोरी टा कोन हुए ना according to the programming language specification सबु वैल्यू पाई न्यूमेरिक पाई गोटे वैल्यू स्टोर हबो कैरेक्टर पाई गोटे वैल्यू स्टोर हबो each data type allocate a fixed amount of memory space according to the programming specification. It is essential to declare a variable so that memory is allocated for a value before it is used in a program. While naming a variable, the following rules can be followed. It can consist of a letter, digit, or underscore. It must log in with a letter and underscore. It must not contain any embedded white space. तमे जेता आमे वेरिएबल टा डिफाइन करिवा से वेरिएबल भितरे कोनोसी स्पेस रहिबो सपोज मु जदी गोटे वेरिएबल टा के डिफाइन करिवि सपोज मु गोटे वेरिएबल के डिफाइन करूची सर को सर न्यूमेरिक पाई जो इन्वर्टेड कॉमास दरकार नै ना जोड़ा कैरेक्टर पाई केवल स्पेसिफाइड हां एटा कैरेक्टर पाई नै न्यूमेरिक पाई इन्वर्टेड कॉमा की दरकार एटी द्वारा मु गोटे वेरिएबल डिफाइन करिवि स्टूडेंट नेम सो आई कैन नॉट गिव एज अ स्टूडेंट स्पेस नेम तो जोटी मते स्पेस दरकार हो सेठी मु कोन करिवि ना अंडरस्कोर यूज करिवि तो एबे मु जेतले वेरिएबल डिफाइन करिवि आई कैन नॉट स्टार्ट द वेरिएबल दैट इज स्टार्टिंग विथ एनी नंबर तो वेरिएबल नेम should not be start with any number and it cannot be start with any symbol एटा दे परिबेनी आज दे परिबेनी तो ए सब सिंबल रहिबन जदि मते सिंबल दरकार मु आइदर यूज करि परिबे डॉलर यूज करि परिबे नले मु अंडरस्कोर यूज करि परिबे so other name we cannot give here the variable name is starting with any letter so it is a permissible and advisable when you define a variable name it should be start with what any letter or if you want to start with any kind of special symbol then you have to use a underscore or you have to use a dollar symbol तो ए दीटा सिंबल हम पे परमिसिबल हबो गोटे डॉलर सिंबल परमिसिबल हबो आ गोटे अंडरस्कोर परमिसिबल हबो आ जो वैल्यू हमें स्टोर करबा को चाहिबा तो सेठी स्टोर हबोने so that is a what wrong naming convention so in addition to the variable naming rule you can you may consider the following variable naming convention the first letter of the variable may indicate the data type तो आमे जते बड़े वेरिएबल नेम ता आमे pseudo code we are now learning the pseudo code so when you give a variable name the variable name suppose I want to give a student name so from the beginning you write n and first letter of variable it must be a capital not must be a capital but it is advisable for what for a readable format or for the good programmer you have to give a variable name as capital first letter must be capital and the before the name you can write n represent which value you want to store so n represent means you can store the numeric value but here as we define student name we have to store a student name so we pass here c the c is a character value next if I want to store a age n age so age is used for storing the age value okay so these are the another format we are using
all the variable need to be assigned a value before their use. So this is to ensure that the memory space allocated to the variable is initialized with a valid value. The variable can be assigned value by using of the following two methods. One is direct assignment, another is indirect statement. So we have the two type of value that we have to directly accept that, and another is what you accept from the user. One is direct assignment, another is accept statement. Direct assignment means if you write a equals to 5, so here you can store the value directly. Another is accept statement, that you have to take the input from the user. So how it is possible? आमे एठी गोटे वेरिएबल डिफाइन कले, एटा होची सुडो कोड जेते बेले आमे लिखिबा सेटा बिगिन और एंड स्टेटमेंट भीतर लिखा जाए. तो आमे जेतरा स्टार्ट करछे बिगिन एंड एंड, नॉर्मली आमे जेतरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेतरा पढिबा ए बिगिन एंड एंड जगह रे कर्ली ब्रैकेट यूज करा जाउतला. एठी कोनोसी कर्ली ब्रैकेट यूज होबनी. सुडो कोड इज ए फॉल्स कोड. बिफोर राइटिंग ए कोड for giving a instruction to the developer, we are using this pseudocode part, and here we are using like begin and end statement. In the begin and end statement we are writing the statement numeric, height, age, counter, then character code. Height is 172, age is 35, n is equals to 10, code is equals to xyz. eta hochi amara direct assignment. एटी देखो आमे न्यूमेरिक n हाइट माने न्यूमेरिक डिफाइन कले, जेहेतु आमे एटी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करिबा वेरिएबल रो आगरे n पास करा हला. एटी एज स्टोर करिया पई वेरिएबल आगरे n पास करा हला. देन एटी काउंटर जे गणिबा पई n काउंटर पास करा हला. तो ए जो वेरिएबल हमर डिफाइन करा हला, ए वेरिएबल आगरे आमे वैल्यूटा इनिशियलाइजेशन करि देबे. n height equals to 172, n is equals to 35, then counter n is equals to 10. बुझियला केमते डिक्लेयर होची? सुनील, मनीषा? Yes sir. Yes sir. मनोरंजन? Yes sir. Then accept statement. Accept statement means it is used to taking the input from a user. आमे जरा मागिबा जे यूजर हमको वैल्यू दो, जेमते कि तमे फेसबुक रे कोन करू छ जेते बेले ओपन करू छ से मागुची एंटर आईडी एंड पासवर्ड. So it is taking the input from the user ID and password. So that is what, that you are interacting with the user. The accept statement is like that. It assigns the value to a variable using accept keyword. The begin and end statement, in the begin and end statement we are using accept variable. For example, begin character cname, numeric age, display enter your name, then accept cname. The first we are defining character cname, numeric n age, तापर से डिस्प्ले करिवो. डिस्प्ले कोन करिवो ना एंटर योर एज, माने से यूजर को कहिवो जे मते एज ता एंटर करि दियो. तो यूजर जो वैल्यू दबो से वैल्यू को से एक्सेप्ट करिवो. तो वैल्यू टा को एक्सेप्ट करिया पे एठी निहला एक्सेप्ट स्टेटमेंट. ओके, डिस्प्ले फॉर डिस्प्लेइंग a statement, accept is used for accepting a statement. Again से so called display enter your age, then accept age, end of the statement. Then it is a question for you, which one of the following variable doesn't comply with the variable naming convention? आ भीतर कोनोसी कोडा सेकंड ऑप्शन. सेकंड आउट आउ कोडा सर तीन में सेकंड ही गुट्टे होबा कोटा. सुनील? The unit price of product name. मनीषा? Unit price. Unit price. Okay, the answer is it is second. Okay, काहे कि second ना एठी मोर स्पेस रही छी. जेतले वेरिएबल टा में डिफाइन करिबा एठी हमर स्पेस रही छी. The space is not applicable. बुझिला? अच्छा Yes सर sir. सेठी अंडरस्कोर दे देतले था.
हां अंडरस्कोर लिखले हो एटी अंडरस्कोर लिखिले सेटा परमिसिबल हो किंतु एटी हमर कोन रही छि वेरिएबल नेम भितरे हमर रही गला कोन स्पेस रही गला तो स्पेस इज नॉट परमिसिबल बुझिला आज्ञा सर आज्ञा Yes, sir. now next question which of the following variable is or are declared as per as the variable naming convention first correct hobo ki nahi No, sir. रॉन्ग first correct hobani kaina it space achi second ta No, sir. रॉन्ग No, sir. second ta wrong hobo kahin ki nahi परसेंटाइल रो आरंभ है Percentile. परसेंटाइल रो आरंभ होई छि अच्छा थर्ड टा फुल No, फुल Oh, थर्ड टा भी wrong होबो kaina it space ରହିला Space fourth ta श्री आइछि fourth ta फोर्थ करेक्ट है fourth ta सर करेक्ट No, होगा sir. ना ऑर्डर Wrong, एट द wrong. रेट no other symbols सर are Wrong. permissible Wrong, sir. Wrong. केवल डॉलर यूज करियो Wrong, sir. डॉलर और हाँ हाँ underscore डॉलर सॉरी सर मु डॉलर को एट द रेट भाभी देली हाँ सर भूल भूल then c name এটা करेक्ट की नहीं Correct. 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 करेक्ट sir. सर এটা करेक्ट आसीबो c street underscore address it is correct or not हाँ Correct, इट sir. करेक्ट sir. सर unit dollar price No, sir. এটা करेक्ट भी बोधे हबो ठीक काहे ना मझिरे में डॉलर यूज करले ना Correct. चलिबो आज्ञा सर लास्ट यस सर करेक्ट करेक्ट Yeah, correct, sir. करेक्ट ओके एटा खाली गोटे छाड़ देई छी यूनिट प्राइस का भी हमर करेक्ट होय आज्ञा सर इट इज ए सर, एटा भल कथाटा। हां को मतलब सर एटा भल पाठटा एटा भल पाठटा सर हां हां एटा देखो write a pseudo code that accept the two number multiply the number and then display their product okay write a pseudo code to accept the two number multiply the number and then display their product देखो केंद्र रोज फर्स्ट pseudo code लिखिबा को हेले मो begin आउ end statement भीतर लिखिबो begin आउ end then यस सर मते बे चिंता करबा को पड़िबो जे मते केतेटा वैल्यू नंबर अछि फर्स्ट टू नंबर दीटा नंबर जोटा की कोन करिवो नंबर माने न्यूमेरिक डिफाइन हबो जोटा मल्टीप्लाई हबो आउ प्रोडक्ट शो करिवो त मो पाखे केतेटा वेरिएबल हला तीनटा वेरिएबल हला तीनटा दीटा नंबर स्टोर करिवो आउ गोटे कोन करिवो ना मते रिजल्ट शो करिवो तो न्यूमेरिक n num1 n num2 देन प्रोडक्ट तो मो पाखरे तीनटा वेरिएबल डिफाइन कराला accept n num1 accept n num2 product equals to num1 into num2 that is multiplying the number and showing a result okay तो प्रथमे दीटा वैल्यू से एक्सेप्ट कला accept num1 accept num2 product equals to num1 into num2 and it store in a product now मते से डिस्प्ले करिवो मते आज्ञा रिजल्ट सर। का डिस्प्ले करिवो the product of num1 धर मो 10 पास कली the product of 10 and second number is 5 the product of 10 and 5 is 50 बुझियला Okay. Yes, sir. आज्ञा सर सुनील मनीषा Yes, sir. यस सर मनोरंजन बुझियलानी the next question for you it is a question that you have to solve এটা सांग सांग मते करी के देखैबो क्लास चला परे within 20 minute भीतर मते करी के देखैबो write a pseudo code that accept
the temperature in Celsius. Question लिखिनियो पाकर जदि खाता थिवो लिखिनियो नले स्नैप नै जा मोबाइल ले जदि थिवो. Write a pseudocode that accept the temperature in Celsius, convert it into Fahrenheit, and then display the result. The temperature in Fahrenheit is equals to 9 by 5 into temperature in Celsius plus 32. Okay. So it is our formula. Write a pseudocode that accept the temperature in Celsius, convert it into Fahrenheit, then display the result. Question लिखने लो. Yes, sir. A computer language provides the tools for some predefined operation. Okay, the tools are known as operators. The operators are categorized in the three ways. One is your arithmetic operator, or relational operator, and logical operator. Arithmetical operator that you know, that is plus, minus, okay, multiplication, okay, multiplication, division, plus, minus. So it is a arithmetical operator. Suppose here we take arithmetic operator are used to perform the arithmetic operation. The n norm equals to n norm into 2. Value of the n norm is 4. So 4 into 2 is 8. Then now we divide a number. Divide two number and return the quotient. So your n norm is 4. 4 by 2 is a 2. Then plus n norm. 4 plus 2 is a 6. Subtract. So it is minus the number. So 4 minus 2 is a 2. It is just subtracting the number. Last one is modulo. The symbol is called as the modulo. Percentile is called as the modulo. The modulo showing the remainder part. When you divide a number like 4 modulo 3. So when you divide 4 with the 3, your remainder is 1. So value of n norm after operation is 1. Yes, sir. Okay. Now the precedence of arithmetic operator. Which operator is calculated first? So if in a statement you found multiplication, division, modulo, plus, minus. So in every part you got the first it is giving a importance to multiplication symbol. Then it is giving a importance to division symbol. Then it is giving a importance to modulo symbol. Then it is giving a importance to addition. Then it is giving a importance to subtraction. It is the precedence. Precedence for high to low. The first जते बडे हमें कोनसी स्टेटमेंट करिया गोटे स्टेटमेंट भितरे यदि सब मोर अरिथमेटिक ऑपरेशन अछि से फर्स्ट प्रायोरिटी दबो मल्टीप्लिकेशन को, देन डिवीजन को दबो, देन मॉड्यूलो दबो, देन प्लस दबो, देन माइनस दबो. बुझियला? Yes, Yes, sir. sir. Relational operator. Relational operator are used to compare two variable or constant. That is comparing the two value or constant. Equals to. Okay. Suppose your norm 1 value is 25, norm 2 value is 40. Equals to. It will check whether the two value is equal or not. Norm 1 is equals to norm 2. Means 25 is equals to 40. Condition is No. false. If you write norm 1 is greater than norm 2, 25 is greater than 40, then it is written you false. False. Then norm 1 is less than norm 2, condition is true, then it is written you true value. Norm 1 not equals to norm 2, the 25 is not equals to 40, the condition is true. Okay. Then it will check norm 1 is greater than equals to norm 2.
So here your condition is false. Clear? Understood this part? Yes, Yes, sir. sir. Sunil, Yes, sir. Mananjan, Yes, sir. ସାର୍ ମୋର କଟି ଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ତାକୁ ବି ପଠେଇ ଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। Then logical operator are used to combine the expression containing in the relational operator. In logical operator we are using and or not symbol. And or not symbol we are using in a logical operator. The logical operator रे केमती काम होबो? So in the case of and operator रे कौन होबो? The logical operator रे से दीटा statement को नेकी compare करिवो. If two statement is true, it return you true. True, false, return you false. Then false, return you false. Then in case of or operator, यदि मु or operator use करिवि ताले कौन होइबो? यदि true return you true, false return you true, false return you false. False. Okay, so in and operator it will only check if the both the statement is true, it is return you true value. In the case of or operator, if any one statement is true, it return you true value. Then comes to not operator. In case of not operator, if true, then it return you false. If it is return you false, it is only evaluate one statement, false, true. If it is false, then it is return you true. If it is true, return you false. If it is false, then it return you true. It is in the case of not operator. Understood? Work of logical Yes, sir. operator. Yes, sir. Sunil, Yes, sir. Mananjan, Yes, sir. the precedents. First, we are giving a importance to not operator, and operator, then or operator. So we are giving a precedence to first, I mean importance or not, then and, then or operator. So when we are using not and or, so it is first giving a importance to not operator, and operator, then or operator. Then while writing the pseudocode,
you can check the condition by using decision making construct. Okay, you can check the condition in a decision making statement. So as you know, your program is three type. हमें जो भी program लिखिवा, program is what? The set of instruction to do a specific task is called as the program. So your program may be of three type. One is sequential, decision making, next is iterative. Sequential means it is just step by step process. Decision making, you have to check a condition. Another is iterative. Iterative means you have to repeat a statement more than one time. So while writing a pseudocode, you can check for the condition by using a decision making construct. So we have the two decision making construct, if construct, then switch case construct. If construct, it specifies the conditional expression that needs to be evaluated is of following type. One is simple if construct, if else construct, nested if else construct. The simple if रे कौन आएगा ना if construct होची three type. हमें जितने conditional construct use करीबा बा conditional statement को execute करीबा हमें if construct use करीबा. If construct ता होची three type. गोटा होची simple if, गोटा होची if else, गोटा होची nested if else. The simple if रे कौन आएगा ना if condition हमें गोटे condition दबा. If condition जदि मोर condition टा true रहउची ताले begin और end statement भितरे जो भी statement मु पास करिवे सेटा execute होबो. So if your condition is true, the statement within the begin and end block is execute. If norm1 is equals to norm2, norm1 is equals to norm2, नेटी condition check कला मेटी दीटा value नबा तापर एटी check होबो whether the two value is equal or not. If the two value are equal, then it's showing you equals number. मारा कंडीशन टा लिखि दउचे केमती रहिबो. हमें यूज करिवा begin end numeric norm1 numeric n norm1 n norm2 next condition display enter first number accept n norm1 then display enter second number accept n norm2 then if norm1 is equals to norm2 display numbers are equal. Okay, so it is the statement for checking whether the two numbers are equal or not. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So in the next class we go for if and else statement. Okay.
In next class we go for the if and else statement. Clear? आज्ञा सर मोर आर नोट्स टा पठे दउची और वीडियो भी पठे दउची सर आज्ञा सर तुमरे जो टैक्स टा देले मते करि दियो 15 मिनिट भीतर करि दियो संगे मते व्हाट्सएप रे पठाओ आज्ञा सर हम्म सर आपण जो कहले जे नॉट एंड ऑट टा जो माने तार प्रेफरेंस टा जो हाई रो लो था तो गोटे स्टेटमेंट रे तीनटा को केमती आसीबे नहीं गोटे तमे जता बेले गोटे स्टेटमेंट भीतर हमको रहिबो गोटे स्टेटमेंट भीतर तीनटा जक यूज कराबो आगु को प्रोग्राम पढिबो अछि सेमते गोटे स्टेटमेंट भीतर हम तीनटा पार्ट यूज करियो बुझियो आज्ञा सर